ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक। शेल्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2n square, and then we are doing the electronic configuration in terms of a subshell. So there are four different type of subshell: S subshell, P subshell, बोलो भाई D subshell and F. S can accommodate maximum of 2 electron, 6, 10, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब मुझे बताइए कि किसी भी शेल को डिपेंडिंग ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हीं में से सब शेल पिक करने हैं। तो अगर किसी शेल में यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर 2, सो क्या सिर्फ एस सब शेल से उसका काम चल जाएगा? एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो एस से काम नहीं चलेगा, उसे एस भी लेना पड़ेगा और पी। तो फर्स्ट शेल में, एज द फर्स्ट शेल कैन जस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, उसका एक ही सब शेल होता है एस। पी सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 2 सब शेल रिक्वायर्ड होंगे, एस और पी। सॉरी, सेकंड शेल। थर्ड शेल में यू हैव कितने इलेक्ट्रॉन? थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18। सो कितने सब शेल रिक्वायर्ड होंगे? एस, पी और डी। ठीक है, अब यही डिवीजन हम थोड़ी सी सीख लेते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं शेल नंबर, और यहां लिख रहा हूं आई एम जस्ट गोइंग टू राइट सब शेल। ठीक है, सो लेट्स सपोज यू हैव शेल नंबर 1 is only divided into one subshell, which is S subshell. A question is, why shell number 1 is divided only into one subshell? Because shell number 1 have a capacity of only 2 electron. So P तो इसे चाहिए ही नहीं ना, ये empty space रख के क्या करेंगे अपने पास? ठीक है, in a similar way shell number 2 is divided into two subshells. S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन in S, and then 6 इलेक्ट्रॉन in a P. 6 plus 2 कितने हो गए? 8. That's the maximum capacity of second shell. Now, what is the maximum capacity of the third shell? बताइए जनाब। 32. So देख लेते हैं हम इसको। नहीं, थर्ड शेल की 18 होती है। सही है। S, P and then D. इसको याद रखना भी बहुत आसान है। कैसे? फर्स्ट शेल सिर्फ एस में डिवाइड होता है, वन सब शेल में। सेकेंड शेल 2 सब शेल में, थर्ड शेल 3 में, और फोर्थ शेल 4 में डिवाइड होगा। तो कौन कौन से 4 सब शेल होंगे? एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, क्लियर? सो यस, capacity of 18 electron, and you can see 2 electron here, 6 here, 10 here, all together you have 18 electrons. Agreed? ठीक है जी, इसमें कोई मसला नहीं है। फोर्थ शेल की बात करते हैं। शेल नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी? 4 का स्क्वायर इज 16 into, yes, that's the 32 electrons. So S में आपके पास आ जाएंगे, it is divided into S. Sorry, I have to write it here. Shell number 4 is divided into S, and then P, D, and then last one is F. ठीक है? So yes, S, P, D and F. Count number of electron: 2, 6, 10, 14. Altogether how many electron? 32 electrons इसमें completely fill हो। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स हाउ वी डिवाइड। अब एक प्रॉब्लम आ रही है। द प्रॉब्लम इज, यस, शेल नंबर 1 फर्स्ट सब शेल, शेल नंबर 2 सेकंड सब शेल, शेल नंबर 3 तीन में डिवाइड हुआ। बट द प्रॉब्लम इज, आई कैन सी सो मेनी एस एंड पीज देयर। बहुत सारे एस और पीज नजर आ रहे हैं, आप देखिए, आ रहे हैं ना? सो एक एस, एस, पी, 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 हाउ वी डिफरेंशिएट? मैं आपसे बोलूं कि एस सब शेल है, हाउ कैन डिफरेंशिएट दिस एस सब शेल इज फ्रॉम द फर्स्ट शेल और सेकंड शेल? है ना? क्योंकि बहुत हर शेल में एस होता है, बहुत सारों में सेकंड ऑनवर्ड सब में पी होता है। सो हम ये रखते हैं कि वी जस्ट सिंपली राइट, हम क्या करते हैं कि इनके सब शेल से पहले इनका शेल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज 4S, 4P, 4D एंड 4F।
ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द डिविजन ऑफ अ शेल्स इनटू डिफरेंट सब शेल्स। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? सही है, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं, सिर्फ एक यहां पर इश्यू आएगा, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन फोर्थ शेल हेयर। अभी लिखता हूं बल्कि। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, shell number one, normal atomic structure, you have the shell number one, then you have the shell number two, three, four, and five. Means after shell number one, you are moving away from the nucleus. आप nucleus से दूर होते जा रहे हैं. Any idea about the energy of the shells? Shell की energy बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी या बढ़ेगी? सोचो. अच्छा, electrons present in a shell number one nearest to the nucleus are attracted most towards the nucleus. इनके force of attraction nucleus के साथ सबसे ज्यादा होगी, ऐसे ही है ना? तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? जो सबसे करीब होगा न्यूक्लियस से। हाँ, सोचो, देखो एक यूनिवर्सल फिनोमेना याद रखना, जब भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान व्हेनेवर द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर द एनर्जी इज लोअर। दो ऑब्जेक्ट कोई से भी हो, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है एनर्जी उतनी कम होती है। दैट्स द जनरल फिनोमेना। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीज, कम हो जाती है ना? और उसके कम होने की वजह से क्या होता है कि एनर्जी बढ़ती रहती है। सो कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू दिस द लोएस्ट एनर्जी कौन सा होगा आपके पास? दिस इज बेसिकली द लोएस्ट एनर्जी, जो सबसे ज्यादा करीब है। क्यों लोएस्ट एनर्जी का होगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज यू मूव डाउन, कैन आई से दैट द एनर्जी इंक्रीजेस? जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, द एनर्जी वैल्यू इंक्रीज। क्लियर? सो द शेल नंबर वन, first subshell, which is the 1s, is basically have the lowest energy. As you move away from the nucleus, the energy of the subshell increases. Agree? अच्छा, for some reason I have to draw this 4s here. ठीक है, आप लोगों ने तो साथ ही ड्रॉ किया होगा, मेरे पेज खत्म होने की वजह से यहां पर एक छोटा सा चेंज आएगा। 4s है, तो मैं ये नीचे पेज वाली डायग्राम को आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्रोड्यूस इट हियर, जस्ट टू फिनिश दिस डायग्राम ऑन द सेम पेज। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर। नाउ दिस वन इज 4s PD। ठीक है, नाउ दिस इज 4s 4p 4d 4f। अब की पॉइंट ये है कि द एफ सबशेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ए लेवल सिलेबस। यहां तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां तक रहेगी? हमारी डी सबशेल तक। क्या चीज अनयूजुअल नजर आ रही है बेटा? कैन यू सी एनीथिंग अनयूजुअल हियर? द अनयूजुअल पार्ट इज दिस वन। यहां मैंने कुछ गड़बड़ की है ना? मैंने 4s को क्या किया है? 3d से पहले लिखा है ना? सो बस एक की पॉइंट ये याद रखना कि द एनर्जी ऑफ 4s, एनर्जी ऑफ 4s is less than 3d. Energy of 4s is less than 3. That's the key point. ये एक्सेप्शनल है, और द रीजन बिहाइंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ए लेवल्स कंटेंट, लेकिन बेसिकली इसका रीजन द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, बस एक की पॉइंट ये, और ये हमेशा बार बार हम याद रखेंगे कि द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d। ठीक है, अब जरा सीक्वेंस लिखते हैं हम। सीक्वेंस लिखते हैं फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी सबशेल टुवर्ड्स द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, सबसे लोएस्ट एनर्जी सबशेल कौन सा है? अपनी नोटबुक देख के बताइए, पूरा नाम बताइए। अब इट इज 1s, तो सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद 2s, देन 2p। वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, so lowest energy is 1s, and then 2s, and then you have 3s, and then 3p. After 3p I should write, yes, excellent, it should be 4s and then 3d and then 4p. अच्छा, यहां भी आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट कि द 4s की एनर्जी का, ठीक है, दिस इज बेसिकली द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ये ऑर्डर जल्दी से याद करना पड़ेगा आपको।
जल्दी से मुराद, you should do it right now. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Got it? सही है जी. Now, how to represent the electronic configuration? सबसे पहले हम शेल नंबर 1 के s सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. How many electron? 2 electrons. So हम 2 शो करेंगे यहाँ पर. That's how we represent the electronic configuration. हम क्या करते हैं? We normally write this is shell number. Agreed? ये तो आप सब जानते हैं ना? This is basically the subshell, and these are the number of electrons. ठीक है? Clear? Shell number, subshell, number of electrons. Shell number basically also called principal quantum number. ठीक है? Principal quantum basically light से निकला है. Quantum number. ठीक है बेटा. Shell number को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, एंड शेल नंबर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय n. अभी हमने 2n स्क्वायर फॉर्मूले में पढ़ा था. क्लियर? सो अगर मैं आपसे कहूं कि इट इज 2p3, इफ आई से, ठीक है, इफ आई से 2p3, शेल नंबर, सब शेल p, गुड. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? एक्सीलेंट. दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली कॉल्ड द लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब ये सारी चीजें सम अप करते हैं. ईच शेल is divided into different subshell. और ये डिवीजन किस पे बेस कर रहा है? How many maximum electron that shell could have. तो shell number 1 just have 2 electron. So उसके subshell कितने होंगे? एक ही होगा, which is 1s. S. Shell number 2 can accommodate maximum of 8 electron. So आपके पास shell number subshell 1 S में 2 electron आ जाएंगे, P में 6 आ जाएंगे. Shell number 3 subshell में divide होगा because it has to accommodate 18 electron and so on. ठीक है? Shell number 4 में divide. F ऑर्बिटल तक हमारी बात नहीं जाएगी. की पॉइंट ये है, फॉर सम रीजन एंड वी डोंट नो द रीजन, द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन. अब आने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ. ठीक है? नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझते हैं ना, अरेंजमेंट. ठीक है? इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले बात करते हैं हम फिल इलेक्ट्रॉन्स in the lowest energy subshell first. And move towards higher energy subshells. ठीक है? अच्छा, that's why this electronic configuration is also called ground state configuration. Ground state configuration. ठीक है? और it is called lower energy configuration. Lower energy configuration. ठीक है? Ground state और lower energy configuration. I hope कि point clear होगा. In exam, if they ask you to write down ground state electronic configuration, if they ask you to write down electronic configuration, if they ask you to write down lower energy, lowest energy electronic configuration, they are talking about the same thing. ठीक है जनाब? Order याद है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, and 4p onward. ठीक है? Now let's see the first example. अब बिल्कुल लिखना छोड़ दीजिए and just have a look. Now you have same sodium with a proton number 11. How many electrons? 11 electron I have to fill. So 1s2, still I have to fill how many electron? 9 electron. Then 2p6, क्योंकि इसकी maximum capacity 6 है. अब कितने हो गए जनाब? 8.
नहीं, 1s, सॉरी, 1s के बाद 2s आता है, सॉरी बेटा। 2s2 एंड 2p6 कितने हो गए? 10 हो गए। पहले हमने कौन सा फिल किया? We fill 1s with 2 electron because the maximum capacity is 2, and then we fill 2s with 2 electron, then 2p with 6 electron. Is still I have 1 electron remaining. अब कहाँ जाएगा? 3s1, ठीक है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अब देखिए, shell number 1, how many electrons? 2 electron. Shell number 2, how many electron? 8. Shell number 3, how many electron? 1. वही है 2,8,1. हमने सिर्फ क्या किया? We divided the 2,8,1 into a different subshell. How simple it is. बस आपको divide करना है. If you know the order, ये order याद है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, तो आप आराम से electronic configuration लिख लेंगे. Let's try Cl with a proton number 17. हाँ भाई, 2,8,7. Remember? Okay, in terms of a subshell 1s2, बोले भाई, काउंट कीजिए, 10 हो गए, 17 हो गए, ठीक है बेटा। नाउ इन टर्म्स ऑफ ओ लेवल से लिंकअप करते हैं 2,8,5 और 6, 7, देखिए इट्स द सेम थिंग। नाउ लेट्स ट्राई वन बाय योरसेल्फ। अब आप ट्राई करो सारे। लेट्स डू नाइट्रोजन 7 विद अ सिंपल वन, and with nitrogen just do phosphorus with a proton number 15. Nitrogen and phosphorus. So nitrogen is 1s2. Excellent, good. Phosphorus is it correct? It is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ठीक है ना? अच्छा, do you realize that if you know the sequence energy का, तो आप और आराम से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. Just keep counting the number of electron you are filling at the top. Now try scandium with a proton number 21. Scandium with a proton number 21. That's the next one, which is then beta. Now try iron with a proton number 26 and copper, chromium and copper. जल्दी से चारों try करो. And you can see 21, 26, 24, 29, they all are the transition metal. अच्छा, scandium में बना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Right? Correct? Iron is again 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 3d, iron. You have to keep counting the electron. Huh?
नहीं नहीं, डी which subshell you talking about? कर सकते हैं 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, डी में, है ना? So yes, 1s2, D is always 10. But in A levels, we have electronic configuration of proton number 1 till 30. 30. So 4s3d पे बात खत्म हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Copper 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Sir, जी बेटा प्लीज. don't we like write chromium differently? Yes, that's what I am talking about in a while, beta. Okay. Now, there is a subtopic called the stability of subshell, and this stability of a subshell is related to the configuration of copper and chromium. ठीक है, तो ये कुछ दो एलिमेंट कॉपर एंड, कोई कंफ्यूजन है बेटा? ठीक है, मुझे बताओ, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन राइटिंग डाउन 1s2, 2s2, 2p6? आर यू ओके विद दीज टाइप ऑफ लाइक द नोटेशंस? ठीक है, अब देखो, basically the concept is quite simple. Shells को सब shell में ही divide करना है. If you know how many different subshells we have, how the shell number 3 is divided into 3 different subshell, you can easily do it. ठीक है, the key point is you have to practice with the proton number 1 till 30. ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से. Now there is a little issue or about the stability of a subshell which is related to the electronic configuration of copper and chromium. तो stability का criteria याद रखना कि a completely filled subshell is more stable. ठीक है, completely is more stable than half filled. Half filled subshell which is more stable than partially. ठीक है, अब मुझे बताइए कि what does the term completely filled means? If you have a p subshell having 6 electron is more stable than a p subshell having 3 electron. The first case is a completely filled. The second, और अगर D है तो D10 is completely filled, D5 is half filled. And what are the possibilities of having a partially filled p subshell? It could be P1, P2, P4 and P5. यानी अगर ना कंप्लीटली फिल्ड हो ना हाफ फिल्ड हो तो वो केस कौन सा होगा? पार्शियली फिल्ड का. ये बात समझ रहे? हाँ, मोर देन हाफ भी पार्शियली में आएगा. ठीक है, इन अ सिमिलर वे इफ यू हैव अ डी सबशेल, D10 is completely filled. ठीक है, D5 is half filled and D1, D2, D3, D4, 4 electron in a D. ठीक है, D6, D7, D8, D9 are basically the example of a partially filled subshell. So a completely filled subshell is most stable. ठीक है, and the partially filled is least stable. एक तो key point ये ध्यान में रखना है. The second key point you have to keep in mind that the difference of energy between 4s and 3d
is very less. ठीक है, 4s और 3d का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? इट्स वेरी लेस, बहुत कम एनर्जी. दे ऑलमोस्ट हैव अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है, सिमिलर. 4s की एनर्जी 3d से स्लाइटली कम होती है. ठीक है, बहुत थोड़ी सी कम होती है. दे ऑलमोस्ट हैव अ सिमिलर एनर्जी. तो द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d इज वेरी लेस. ये दो बातें ध्यान में रहेंगी. क्या बातें की? द फर्स्ट थिंग इज दैट basically you have the energy of, sorry, a completely filled subshell is more stable as compared to a half filled. Half filled is more stable as compared to a partial filled. अभी दो बात. And the energy difference between 4s and 3d is very less. So electron 4s से 3d में बहुत आराम से jump कर सकता है, जा सकता है. अब जरा आते हैं towards the configuration of copper and chromium. Configuration of chromium, proton number 24, and copper, which is proton number 29. This is the special cases, और यही दो cases हैं जो हमें समझने हैं. ठीक है, proton number 29 and now let's write down the electronic configuration of chromium, proton number 24, which is equals to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Agree? If I shift one electron from here till here and make it 4s1, 3d5, which one is more stable configuration, the top one or the bottom one? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता हूं 4s से into a 3d, ठीक है? So can I say that no, this one is more stable because your d orbital is now half filled. Half filled is more stable than partially filled. S हाफ filled. लेकिन कौन सा डोमिनेंट सबशेल है, S या D? किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं? D. तो D के स्टेबल होने से you will get overall more stability as compared to S. ठीक है, सो कॉपर के केस में हम क्या करेंगे? वी डू नॉट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 4s2 3d4, बल्कि वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 4s1 3d5. ठीक है, लेट्स ट्राई कॉपर. अब बताओ कॉपर में अब क्या होगा? कॉपर विद द प्रोटॉन नंबर 29. कैन यू ट्राई कॉपर एंड जस्ट लेट मी नो कि व्हाट शुड बी द केस इन द केस ऑफ कॉपर. कॉपर में क्या होना चाहिए? अरे पहले तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले. द कॉन्फ़िगरेशन 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d. बोलो भाई 3d9. Excellent. अब क्या करूं? Excellent. So if I shift one electron from here till here, I can easily make it 4s1, 3d10. It means that in case of copper हम ये नहीं लिखेंगे. In case of copper we're going to write 4s1, 3d10, and now this become a completely filled subshell which is going to be more stable. अब सवाल ये है कि कहां कहां ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अप्लाई होगा कॉपर और क्रोमियम, नथिंग एल्स. कहीं और पॉसिबल ही नहीं है. लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि 4s2 3d3 वैनेडियम, 4s2 3d3, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करने का कोई फायदा होगा? 3 से 4 हो जाएगा, still remain partially filled. If I say this is 4s2 3d7, is there any फायदा यहां से यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट? नो फायदा. It means that, excuse me, it means that it's remain the same, partially filled. So only copper and chromium that make the d subshell either half filled in case of chromium or partially filled, sorry, completely filled in case of copper. तो कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होपफुली याद रहेगी आपको. ठीक है, so I'm just going to come back here and I'm going to make a correction. आप भी करेंगे and we are going to write it down as 4s1 3d5, and I always do it with a correction ताकि याद रहे ये बात. So I'm going to shift one electron from here till here, make it 4s1. देखो मैं तो रब करके लिख सकता हूँ but I'm just making a correction.
3D type. सही है. So this is a case of a configuration of copper and chromium. Hopefully ये बात याद रहेगी. सही है. So this is all about electronic configuration. Let's quick recap लेते हैं. The first thing, we started with the basic concept of electronic configuration that from the O levels, which is 2, 8, 8, 1. Maximum number of electron in a shell can be calculated by the formula 2n square. Subshell का concept आया. We have 4 different type of subshell with a maximum number of electron 2 in a S subshell, 6 चाहे जिस shell का भी 6 of p electron maximum, D 10 electron or F 14 electrons. ठीक है. In a similar way, each shell is divided into different subshell. First shell is only divided into one subshell, which is the 1s. Second shell 2 में, 2s और 2p में. Third shell 3s 3p 3d में. Fourth shell 4s 4p 4d और 4f में है. 4f is not a part of our A-level syllabus. The only key point is that the energy of 4s is less than 3d. So whenever we are filling electron in the energy level diagram, like from the lower energy towards the higher energy, we have to fill 4s before 3d. ठीक है. So this is the sequence of energy. यहाँ पर एक key point add करें और वो key point ये होगा कि 4s fills before 3d. ठीक है. This is it कि 4s must be filled before 3d. This is the symbol of notation of an electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6. सबस्क्रिप्ट में हम सुपरस्क्रिप्ट में हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं. S is the subshell और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले लिख दिया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए. कौन सा? ये वाला. ठीक है. And then you fill electron accordingly, 1s2, 2s2, 2p6 and so on. अच्छा, प्रोटॉन नंबर 1 till 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. प्रोटॉन नंबर 1 till 30 ये मस्ट है कि आपको आनी चाहिए. इसमें ऑलमोस्ट 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं आज की क्लास में. ठीक है ना. ऑलमोस्ट 10 कर चुके हैं. रिमेनिंग है स्किप करके कीजिएगा कि प्रोटॉन नंबर 3 कर लिया, उसके बाद 8 कर लिया, उसके बाद 20 कर लिया, 22 कर लिया. सीक्वेंस में करेंगे तो इज गोइंग टू बी द सेम थिंग. P1 P2 P3 में ऐड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहेगा ना इनटू अ सबशेल. तो मेक श्योर दैट यू डू इट रैंडमली. ठीक है. बट विद इन अ रेंज ऑफ प्रोटॉन नंबर 1 till proton number 30. So I'm just keeping it till here today. And then we talk about the subatomic orbital and so on in a next class, inshallah. ठीक है. अच्छा सर, एक